Okay, let us start today. Electric potential energy. What is electric potential energy? Suppose we have an electric field in a space. Electric field in a space is given. There must be a source which will produce this electric field, and charge is kept in this field. Each point there is a potential for it, and due to the interaction of the field, electric field and plus this charge make an interaction to give energy. Okay, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में चार्ज रखा होगा, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्शन करेगा और दोनों के इंटरेक्शन के कारण हमारे पास एनर्जी होगा. उस एनर्जी को हम चाहते हैं कि क्वांटिफाई करें. ओके, तो जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसलिए इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. And okay, now think that you want to move it in a space, then you have to do some work. And since we are dealing with conservative field, हम लोग conservative field में इस motions को हम define करेंगे. Then हम लोग जानते हैं conservative field, this is your equation, governing equation. Change in potential energy plus change in kinetic energy is going to be 0, because it characterizes the nature of conservative field. Suppose we have a source, a Q charge, and it has electric field distributions, lines of distribution is like this, and suppose a test charge Q naught here, and its position vector is RA, and another position vector is RB, and you move this charge like this from QA, from RA to RB, and just you are moving this very slowly, not accelerating. Then suppose at this point you expect this electric field in this direction, and charge is at here now. In the journey it is here, and you have to reach from A to B, and just you want to find out work done. And displacement is in this direction, ds, and this is the angle. Then work done from A to B is nothing but F. Force is in this direction and displacement is in this direction. Then you can write F ds cos theta A to B. Position vector A to position vector B. Force is electric force, so it is equal to Q by E. E is the electric field at this point. Now we can write it is Q naught, test charge is Q naught, E ds cos theta, and integration.
This is how can you integrate it, because E is a function of R. I can write E is a function of R, 4 pi epsilon naught R square. Then ds cos theta, this is dr. ds cos theta is dr. Okay, component of ds in electric field, direction of electric field is dr, and we have dr is equal to ds cos theta. So dr is a displacement in direction of electric field. So you can write q net E dr. Now you can put the value of E as q by 4 pi r square. Now work done, q net integration over this position vector r to rb, and E we have q by 4 pi epsilon naught r square dr. Now this is function of r and a small dr. Now you can integrate it. You can't integrate a function if this function E is a function of r and ds. This is different thing. ds is different thing. You can't integrate E with ds. Okay, both the function should be, this function should be, if we integrate it over dr, then this function should be in function of r. Now q net 4 pi epsilon naught integration 1 over r square by dr, r minus 2, integrate it, minus 2 plus 1, we have r minus 1 minus 1. This means we have q net minus 4 pi epsilon naught 1 by r. q naught ra to rb, here minus sign. Okay, you can absorb the negative sign in reversing this limit of integration. I can write ra minus rb. Okay, now negative sign is absorbed here. So what you get, back done, it be we have q naught 4 pi epsilon naught ra minus q naught 4 pi epsilon naught rb, and of course the motion of the sharp particle in conservative field, and work done in conservative field is always decrease in its potential energy. This is decrease in your potential energy. So you can write u1 minus u2, and this is a point function, only depends upon the point or in the space. I mean to say only ra. Okay, so you can write q net by 4 pi epsilon naught ra minus q naught 4 pi epsilon naught rb. Then we have u1, sorry, you can say position vector ra, we have q naught 4 pi epsilon naught ra. This is your potential energy in a given position defined by vector ra. Then you can simply write q naught, product of the point charge. This is source charge and this is the test charge, and 4 pi epsilon naught ra. This is your energy, potential energy. And you see this is nothing but
Q into V potential due to this source charge and this is the test charge. Okay. But hold on, a caution, this is moving but uniform velocity, not accelerated. यदि एक्सेलरेशन होगा तो रेडिएशंस इमिट करेगा और भी कम्प्लेक्सिटी बढ़ सकता है और आपको मोशन एनालाइज करने में दिक्कत होगा। आप फिर ये नहीं दे सकते इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा ये, यदि मोशन एक्सलेट करेगा तो ये इसका फोर्स हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मोशन जो हुआ स्लोली हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी पॉइंट चार्ज को प्लेस करेंगे तो उसकी एनर्जी होगा Q नेट इंटू V। क्योंकि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकें कंजर्वेटिव फील्ड में, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी होता है और हम इंटीग्रेशन को स्किप कर सकें। जैसे हम F डॉट डी ए किए, इसको हम इस चीज को हम स्किप करना चाहते हैं, तभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर पढ़ने का इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन होगा तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, जहां पे वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप इसे यूज कर सकते हैं और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस यही आपको बेसिक टूल्स है, स्मॉल इक्वेशन, आप इसे यूज करें, आपका आईटी का सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देख चुके हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का इंट्रैक्शन होगा उस चार्ज में कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा। ठीक है, जब हम सिस्टम ऑफ चार्ज कंसीडर करते हैं, सपोज सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, आपका एक Q1 है और एक Q2 है और दोनों के बीच x डिस्टेंस है, तो इन दोनों का इंट्रैक्शन होगा और इंट्रैक्शन जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा U इज पोटेंशियल एनर्जी होगा Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught x। ठीक है, यदि हम Q1 Q2 और Q3 लेते हैं और ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x3 है, ये x2 है, तो ये जो सिस्टम है इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। देखो Q1 Q3 से इंट्रैक्शन होगा, Q3 Q2 से इंट्रैक्शन होगा और Q1 का Q2 से इंट्रैक्शन होगा। इन नंबर ऑफ इंट्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, then what will be the number of interaction? This is nothing but n into n minus 1 by 2. n is number of charge, यहाँ पे कितना चार्ज है 3 into 2 by 2 we have 3 interaction। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का जब लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, Q1 by Q2 by 4 pi epsilon naught x2 plus Q1 Q3 4 pi epsilon naught x1 and Q3 Q2 by 4 pi epsilon naught x3। ये आपका इस सिस्टम का एनर्जी है। जब हम इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे, यदि हम x1 को बदल देते हैं डिस्टेंस को, तो एनर्जी सिस्टम का बदल जाएगा। ओके, ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। ठीक है, इसी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। Okay, and this is your number of interaction. You just write this expression, you can find the energy of the system. Whenever you try to alter this configuration, then of course potential energy will be changed correspondingly. If x1, x2, x3 आप चेंज करते हैं, उसके correspondingly आपको x2, x1, x3 जो चेंज होगा तो सिस्टम का एनर्जी भी चेंज हो जाएगा।
जब जो सिस्टम का एनर्जी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, तो इसमें क्या होगा, इस चार्ज में काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। तो आप पोटेंशियल एनर्जी घटा सकते हैं और उतना काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा। इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बस इतना बेसिक ही बेसिक ही आपको जानना है, बस खेल जाना चाहिए बस बेसिक फॉर्मूला से, ठीक है। देखो, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, सिर्फ पॉइंट चार्ज था। यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम Q1 और Q2 चार्ज हम प्लेस करते हैं, तो अब इस सिस्टम का एनर्जी क्या है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ था, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल V1 हो जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल V2 हो जाएगा। दिस इज योर पोटेंशियल। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो वहां उसमें पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही, इससे पहले हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के स्केलर्स में हम यूज करते हैं। स्केलर फंक्शन है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेगा। तो इलेक्ट्रिक सोर्स हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पोटेंशियल हमारा मिलेगा। तो आप बताएं कि इन दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी के कारण हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यदि दोनों इंटरेक्शन जब करेगा तो क्या होगा हमारा Q1 Q2, और ये दूरी x है, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और इसका फील्ड के कारण इंटरेक्शन जो होगा उसके कारण जो एनर्जी होगा वो क्या होगा V1 Q1, और इसका एनर्जी कितना होगा इस फील्ड के इंटरेक्शन के कारण, वो होगा V2 एंड Q2, एंड दिस इज योर एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Okay, now please do a simple question, some basic illustration to support all this statement, whatever I have made here. Suppose now you have three equal charges are placed at the corner of equilateral triangle. This is your equilateral triangle, side A, and 3 point charges are kept at the vertices of this equilateral triangle AAA. Calculate the potential energy of the charge of the system. You have to find potential energy of the system. You know how can we solve this? Potential energy of the system, and the work, second one, work required to decrease the side of triangle, decrease the side of triangle to A by 2 third one is, if the charges are released from the shown position, charges are released from the shown position, each of them has mass m, then find the speed of each particle. Then find the speed of each particle when they lie on triangle, of side 2A. जब ये 2A साइड हो जाएगा तो सब इस सब का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मतलब इसका वेलोसिटी क्या होगा,
स्पीड क्या होगा। तो बस एनर्जी कंजर्वेशन रूल अप्लाई करेंगे कि हम जब भी ये डिस्कस कर रहे हैं आपको माइंड में एक ही चीज बॉर्ड होना चाहिए, दिस इज योर टूल्स टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आप इसकी एनर्जी तो आसानी से निकाल सकते हैं, पता है आपको क्यू स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 करेंगे तो, एंड K ए, और इसे 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, देन आपका यह टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है आपका ये है। ओके, जब इसका साइड को हम 2a कर देते हैं, ये साइड है a से 2a हो जाता है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है, फाइनल कितना होगा 3k Q स्क्वायर 2a हो जाएगा। और जानते हैं कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज 3k Q स्क्वायर बाई a माइनस 3k Q स्क्वायर बाई 2a। ये साइड a/2 करना है, ठीक है, इसे a/2 करना है, ठीक है। तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, सेकंड में है, जब 2a करेंगे तो इसका स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो वर्क डन तो हमारा ये हो गया u इनिशियल माइनस u फाइनल, दिस योर वर्क डन। ओके, कैन सब्ट्रैक्ट दिस। नाउ जब 2a करेंगे तो हमारा वर्क डन क्या होगा, एंड यू नो वर्क डन इज, जो वर्क डन होगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये कंजर्वेटिव एंड दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड यू नो वर्क डन इज नथिंग बट दिस एनर्जी चेंज। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हमारे पास हाफ, सभी की एनर्जी होगा 1 2 3, देन यू कैन फाइंड 3m v स्क्वायर इक्वल टू 3k Q स्क्वायर बाई a माइनस 3k Q स्क्वायर बाई 2a, क्योंकि साइड को हम 2a कर रहे हैं। तो यहां से आपका वेलोसिटी निकल जाएगा। ओके, यू कैन फाइंड द वेलोसिटी। सो दिस इज इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे फील्ड में, और इसमें जब मोशन होगा तो वेलोसिटी इस तरह निकाल सकते हैं। बस एक ही इक्वेशन है, इसको आप ध्यान रखें। जब ये इसको यूज करते हैं तो ये बहुत आसान होता है कि फिजिक्स, थोड़ा सा समझना होता है। इसे क्वेश्चन है, देखते हैं। फिर से इसी तरह से चार्ज का इंटरेक्शन होगा, तो हम लोग बस एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, उसे यूज करेंगे, इसे भी बन जाएगा। यदि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और हम अल्फा पार्टिकल्स को एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसको काइनेटिक एनर्जी हम लोग देते हैं, तो क्या होगा, ये इसके अप्रोच करेगा वेलोसिटी के साथ, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये स्टेशनरी है। ओके, इसमें कोई रिकॉइल नहीं होगा। जब इंटरेक्शन होगा अल्फा पार्टिकल से, इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इसका एटॉमिक नंबर 50 है, इसमें चार्ज हो गया 50e, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा 2e। ओके, तो आप कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दिस इज योर क्वेश्चन। क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी यहां पे आएगा, और ये जो कुछ डिस्टेंस
रह जाएगा, आप मान लेते हैं x। यहाँ पे इसका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे जाकर रुक जाएगा, इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। इसके बाद जो एनर्जी बचेगा, इस दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी बचेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। दस यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। ओके, यू नो, जस्ट यूज द बेसिक्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी 0। ओके, जब भी आपका कोई मोशन हो बस इसे यूज करना होगा आपका। तो आपका काइनेटिक तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ यू नो हाफ जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या होगा, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इसे x मान लें, जो आपका क्लोजेस्ट अप्रोच है। ठीक है, यहाँ पूरा इसका पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जाके ये अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा। तो बस आपको r निकालना है, और ये है 10 इंटू 10 टू द पावर मेगा, मतलब 6। Q1 एंड Q2 2e into 50e and 1/4 जो होता है 1/4 pi epsilon naught, you can write 9 into 10 to the power 9, so you can write 9 into 10 to the power 9 by x. This is your closest approach. Now you can find x and you can find x from here. So solve it, but put E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, then this will be your closest approach. ठीक है, तो जब भी चार्ज का मोशन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, बस एक ही फॉर्मूला हमेशा आपको यूज करना होगा। वेरी सिंपल। कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, बेसिक को यूज करो। So next illustrations, a proton moves with a speed u directly towards a free proton at rest. Now find distance of closest approach. Distance of closest approach. सेम क्वेश्चन है, हाँ, पर यहां देख रहे हैं वो काफी हैवी था, उसमें रिक्वायल नहीं हो रहा था। यहां पे क्या होगा, रिक्वायल होगा यदि प्रोटॉन का मास m कंसीडर करते हैं, चार्ज प्लस E, ठीक है, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन। तो क्लोज अप्रोच क्या होगा, यदि ये प्रोटॉन यहां पे रखा हुआ है, इसका मास m है प्लस E चार्ज है, और कोई प्रोटॉन यदि मोशंस में आएगा, जब नजदीक आएगा तो इसमें रिपल्सन होगा, और दोनों सब साथ वेलोसिटी से जब चलना शुरू हो जाएगा, इसमें भी मोशन आएगा। कुछ देर बाद क्या होगा, इसका वेलोसिटी रिपल्सन के कारण ये से रिपेल करेगा, घटेगा, और इसका बढ़ेगा, फिर दोनों बैलेंस हो जाएगा, और दोनों का जो वेलोसिटी होगा v हो जाएगा। उस समय ये जो डिस्टेंस होगा, जब मिनिमम ये वेलोसिटी दोनों का v है, दोनों का बराबर है, और वो उस समय जो डिस्टेंस x है, वही आपको डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है, एंड दिस इज योर क्लोजेस्ट अप्रोच। और यहाँ पे जो स्पीड है u है। नाउ आपको u निकालना है, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके v निकाल सकते हैं, फिर एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। वर्क एनर्जी थ्योरम, ओनली कंसेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। मोमेंटम क्या है, शुरू में mu, एंड बाद में हमारा क्या है m, 2mv, mv प्लस mv, देन v यू हैव u by 2। ओके, आपका ये वेलोसिटी है। अब एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। ठीक, जब एनर्जी कंजर्व करेंगे, शुरू में एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ mu², और बाद में क्या होगा, दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
जिसे हम कह सकते हैं E इंटू ई स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 2, और b की जगह पे आप u बाई 2 पुट कर दें यहाँ पे, देन यू कैन फाइंड x योर आंसर। ओके, आप b की जगह पे ये पुट कर दें और सब ट्रैक कर दीजिए तो आपका x चला आएगा। तो कितना आएगा, ई स्क्वायर के टर्म में तो आएगा हाफ एम बी स्क्वायर पुट करेंगे तो पाई इप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर, दिस योर x, दिस योर आंसर। कुछ नहीं है, बिल्कुल मैकेनिक्स जैसा है, जो वर्क और एनर्जी पढ़े थे बस उसे कहीं अप्लाई करना है। ये प्रोटॉन था, सेम मास था, इसमें रिक्वायल हो गया, वो बहुत हैवी था, इसमें रिक्वायल नहीं हुआ था। आप स्कैटरिंग ऑफ न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स, तो इसका उपयोग वहां पे आएगा जब हम लोग क्लोजेस्ट अप्रोच करके एक लिमिटिंग जो रेडियस निकालते हैं किसी भी न्यूक्लियस का, बस उस क्लोजेस्ट अप्रोच ही उसका न्यूक्लियस का अपर लिमिट रेडियस था। ठीक है, उससे ज्यादा, उसे कम होगा ऑलवेज रेडियस, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, one more illustrations. A particle of mass m carrying charge q is projected with velocity b from point A towards an infinite line of charge from a distance A. Its speed reduces to 0 momentarily at point B which is at distance A by 2 from line charge, from the line charge. If another particle of mass m, if another particle of mass m and charge minus q is projected with same velocity v from A towards the line of charge, what will be the speed at B? This is your question. What will be a speed at B? This is your question. It's very simple. Just still interact. Just use this equation. Okay. कुछ नहीं है, बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशंस होगा, उस मोशन को हम लोग इस इक्वेशन से जस्टिफाई करेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। ओके, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन।
very enlightened formula, I think. Very simple and very useful, handful, and I think very enlightening one. Of course, you can use this and find answer. So we have a line charge, and this is your point A, and Q is being projected with velocity v, and this is your B, and now it comes to rest, and this your distance is A by 2, and this distance is A. Well, and some similar cases, but this time this is point A, this is velocity v projected with same velocity v, but it has a negative charge. Now find the velocity at B. It will not stop. This has negative charge and electric field in this direction. Okay, this is the direction of the electric field, and this is the direction of electric field, and this is positive charge. So this electric field can apply the force in this direction to these charges. So it is facing opposite force while in the motion. So it will stop here, and its kinetic energy will be converted into potential energy. But this time, force is in this direction of the motion, so it will accelerate. This will accelerate. So you have to find the velocity at this point. It will not stop. In this situation, this will deaccelerate. So that's why it stop here. Because force is in opposite direction to the velocity. So here deacceleration will occur, and here acceleration. This is here motion, and this is the force. All belongs to same direction. So here acceleration will be occur, and here deacceleration will be occur. Okay, well, but 2 point, this is the source is same. So potential difference, very same in both the cases. So just use this one. So change in the kinetic energy, just energy conversion. Change in kinetic energy equal to change in the potential energy. That is Q VB minus VA. Q okay, this is your things. Now again, in this case, it will accelerate. So again use this one, change in kinetic energy plus change in potential energy is equal to 0. So change in kinetic energy is what? Here velocity will be increased, of course, then change in kinetic energy half m v dash whole square minus half mv square. This change in kinetic energy, you can write gain in potential energy. Okay, and this is the same thing, and this is equal to half mv square. So you can write half mv dash whole square barabar, this side you put this half mv square plus half mv square is going to be mv square, and will cancel out. V dash whole square is equal to 2v whole square. So v dash is equal to root 2v. This will be your velocity. This is the velocity here. Okay. This is the point function depends only on the source, not on the nature of the charges you have, positive or negative. Potential is same. So you can put minus here, but this side is going to be 0. Positive, okay. I have absorbed the negative sign of this because I have written this one is positive one. So this should be positive.
Okay, because gain in the kinetic energy. Okay, this has gain in the kinetic energy, and this is the loss one. So, if you are confused with the negative charge, I haven't described it, inculcated you, but I have absorbed it here because in increase in the kinetic energy, just simply write these things and automatically negative charge is absorbed here. So sometimes you can use directly because you have now experience now to use all this formula. By experience it becomes somewhat easy to write directly, skipping some steps, basic step, okay. सो आपको जब भी चार्ज दिया हो, आप कुछ मोशन हो रहा हो, तो एक ही फॉर्मूला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप इसे यूज करें और सारा प्रॉब्लम तो आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए आपका मेटल प्लेट है। ओके, ये आपका मेटल प्लेट है, ठीक है। ये आपका मेटल प्लेट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम मीटर स्क्वायर। ये आपका चार्ज डेंसिटी है। ये लार्ज मेटल प्लेट है, दिस इज योर लार्ज मेटल प्लेट और 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करेंगे इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। इससे क्या होगा, इसका किनेटिक यहाँ वेलोसिटी होगा जो गेन करेगा, डी एक्सेलरेट होगा। तो ये डिस्टेंस डी है, तो कितना डिस्टेंस आपको होना चाहिए बताएं कि जस्ट यहां पे रीच कर सके, जस्ट फेल्स, जस्ट यहां तक पहुंच जाए। ओके, इससे कोलाइज ना करे लेकिन जस्ट वहां तक पहुंच जाए, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए। फिर से उसी तरह से जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी आप यूज कर सकते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, देन चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वी हैव 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 100 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Now it's converted into joule, and you know this. Change in Q into del V, change in potential, we have 100 1.6 into 10 to the power minus 19. Now, change in potential, potential is defined by E into B. You find this from this here. You can see change in potential here, sigma by epsilon naught into D, and change in potential comes from this equation. You can find the D. Now you will find the D. This will be your answer. Please solve this. हाँ, चार्ज दोनों पे तो सेम ही होगा ना, पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, चार्ज तो सेम ही होगा। तो यहां भी लिख सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो 100 वोल्ट हो जाएगा। और epsilon naught by charge density, this is your D. You can put the value of epsilon naught 8 into 8 into 10 to the power epsilon naught, I think minus 12.
can find the D now. इस ओनली आप ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बिकॉज वी आर डीलिंग कंजर्वेटिव फील्ड. अच्छा, वन मोर इलस्ट्रेशंस. सपोज आपका ये क्या है, अनचार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर है. दिस इज अनचार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर है. इसका रेडियस ए है. और एक और अनचार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस बी है. और इसके सेंटर पे हम प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं तो क्या होगा. तो आपको निकालना है फाइंड द पोटेंशियल. फाइंड द पोटेंशियल कहां कहां, सभी जगह. बाहर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, यहां क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा. फाइंड द पोटेंशियल इन एवरीवेयर. ओके, और इन्फिनिटी एक रेफरेंस देते हैं जहां पे हम जीरो मानेंगे. तो जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. सेम अमाउंट चार्ज कंजर्वेशन. इफ आई कंसीडर R इज ग्रेटर देन B, तो पोटेंशियल क्या होगा. तो ये बाहर एक लगेगा कि पॉइंट चार्ज है, ये रिस्पॉन्स करेगा बाहर को सिर्फ ये चार्ज, और इसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाता है हमारा Q/4πε0 R. यदि हम इस सरफेस पे काउंट करते हैं तो क्या होगा, V एट द सरफेस, तो हमारा हो जाएगा Q/4πε0 B. ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल वेरिएशन नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो पोटेंशियल का वेरिएशन नहीं होगा. तो जब हम A इज ग्रेटर देन R ग्रेटर देन B लेते हैं तो हमारा पोटेंशियल जो होगा सरफेस के बराबर ही होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होगा, घटेगा नहीं. पोटेंशियल क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस रहता है. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, यहां पे होगा पर यहां पे नहीं होगा, पर पोटेंशियल क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. सरफेस पे जो होगा वो अंदर उतना ही होगा. इतना के बीच में पोटेंशियल आपका ये है. अब हम कंसीडर करते हैं R इज लेस देन A. हम A के अंदर चले आते हैं, ठीक है. तो क्या होगा, इसके कारण तो कंटिन्यूअस होगा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा V (1/4πε0 Q/B). और इसके कारण भी क्या होगा, अंदर सेम रहेगा प्लस माइनस Q'(4πε0 E). और पॉइंट चार्ज मान लें कि इस पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं, ये दूरी R है, तो जाएगा प्लस Q/4πε0 R. ये आपका पोटेंशियल है, दिस एट दिस पॉइंट. ओके, दिस इज से P, देन P. दिस इज योर पोटेंशियल.
Well, now you can find the potential at any outside, in between R and B, inside R. Now another question is, आप देख सकते हैं जब कंडक्टर कंसेंट्रिक कंडक्टर दिया हो तो आप कैसे पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, यदि ये आपको दिया है, ये R1 है और ये R2 है, ये Q1 दिया हुआ है, ये Q2 दिया हुआ है, तो आप फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल। Find the expression of potential for each cell. V1 यदि हम सरफेस 1 पे क्या होगा, तो इसके कारण जो होगा सरफेस पे Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, हम इस पॉइंट में निकालना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या होगा, और इसके कारण क्या होगा, जो सरफेस होगा वही अंदर ही होगा R2। यदि हम V2 पे निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये पॉइंट चार्ज बाहर है, ये चार्ज है जो इसे बाहर लेना है, तो हमें पॉइंट चार्ज की तरफ भी हेल्प करेगा। Q2 सॉरी ये Q2 है, ये Q1 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये बाहर आप लिखते हैं तो दोनों चार्ज को ऐड कर देते हैं। ओके, now write a potential. How to write a potential inside the charge distribution? Okay, now you have a solid sphere, and here is charge distribution. Here the charge distribution is given. Then you have to find VR. This is R. R is distance from the center. R is distance from center. So in charge distribution, of course, this is a spherical, non-conducting solid sphere. This is non-conducting solid sphere. Then you have to find the function of potential, how potential will vary within this charge distribution. Okay, this is your question. Find how VR potential, this function, vary within the charge distribution. Outside the charge distribution is very easy. Just consider it as a point charge. You can write the expression Q by 4 pi epsilon R. But within the charge distributions, it is important to find. Okay. You know, dV, you know this, use this basic formula, E dot dr. Okay, this is basic equation to find potential, change in potential. If you know how in the charge distribution how electric field is varying, you know within the charge distribution how the electric field is varying. Of course, you know this. I can write dV Q is equal to Q charge density suppose it has total charge Q. In the total charge is Q. Now you can write electric field as Q by 4 pi epsilon naught R cube R. Okay.
and dr, and take limit you are just infinity is going to be 0, and this is the V surface. You can find at the surface. And enter in from surface, you just enter into this charge distribution. So Vs, you enter the VR here, R and is to R. This is your question. So V minus Vs, I can write Vs minus VR is equal to Q by 4 pi epsilon naught R cube R square by 2. Now VR you have Vs minus Q by 8 pi epsilon naught R cube R square. You know what is the surface? At surface, you know the potential. You know this Q by 4 pi epsilon naught R, where R is the radius of this sphere. Radius of this sphere. Now I can write simply Q by 4 pi epsilon naught R minus Q by 8 pi epsilon naught R cube R square. Excuse me first, and this is R is to R, varying from R is to R. Just put this R, it is going to be this much, and R, so you can write V is Vs, V surface 3 minus R square by R square. This is your variation of potential with R. This is varying with parabolically. With R square term. And this is going to be decreased from the center. Maximum value, V max is at center, R is equal to 0. So at center, V is equal to, we have V surface by 2, V surface 3 is to 2. That is 1.5 into Vs. सरफेस पे जितना होगा उसका 1.5 टाइम्स सेंटर पे होगा. ठीक है, ये इसका वेरिएशन है. सेंटर पे ज्यादा होगा, इस तरह से इसका इक्वेशन होगा जो वैरी करेगा. ये R है, ये हमारा V 1.Vs है, when R is equal to 0, और R पे हमारा क्या है, Vs है. इसके बाद ये आपका घट रहा है. by V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R. ठीक है, ये रेडियस के बाद देखिए R से घटेगा, और ये जो ग्राफ है ये पैराबोला का है. ठीक है, R स्क्वायर वाला टर्म. ठीक है, R बराबर R पे Vs हो जाएगा. आप यहाँ R बराबर R पुट करें, आपको मिलेगा Vs. जब R स्क्वायर
and this is here 1 by r. अब क्वेश्चन हो सकता है कि आप वर्क डन करें, मूव कर को बी से यहां सेंटर से हम सरफेस से सेंटर में चार्ज को मूव करेंगे तो वर्क डन क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब स्फीयर था, स्फीयर में जो चार्ज पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, v सरफेस बाई 2 3 माइनस r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, दिस योर वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। यदि हम q चार्ज है, इसे नाम b दे देते हैं और इससे a और ये r है। नाउ वर्क डन in moving the charge from A to B. Okay. A to B. V surface और V center. V center का हमारा पोटेंशियल क्या है, V surface. ठीक है। तो what is change in potential? That is we have 0.5 Vs. Now what is the work done? 0.5 Vs into Q. 0.5 Vs Q by 4 by 7 not. ये चार्ज को हम बड़ा Q दे देते हैं ताकि ये चार्ज अलग हो जाए, और ये चार्ज Q है, बड़ा चार्ज Q by R. This is your answer. This is work done by electric field. Change in negative of change in potential energy. ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस चार्ज का मोशन कैसे होगा बस ये जानना है। बस आपको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक एनर्जी घटेगा दूसरा एनर्जी बढ़ेगा। वर्क डन इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज कंजर्वेटिव फील्ड में जो बर्डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी घटना, जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा उतना ही बर्डन होगा। बस घटा दो भाई, 4 से गुना कर दिए। यहाँ पे पोटेंशियल का वेरिएशन हम जानते हैं, सरफेस पे क्या है, सेंटर पे क्या है। तो कितना एनर्जी घट गया, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज Q, और आपका बर्डन हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।